What's up, my guy? What's Finally, up? we're doing this, dude. What's up? Finally. So proud of you, man. So Thank you, proud. thank you so क्या much. सेटअप लगाया बड़ा, मेहनत किया है, खर्चा किया है. क्या अभी आपसे ही तो सीखे हैं भाई. 3 साल से देख High रहा हूँ. budget, high budget. गाड़ी रुकती नहीं है, फुल थ्रॉटल. बात तो चल रही है भाई. हम भी लेंगे थोड़ी. इंशाल्लाह. ले लो ब्रो, मर्सिडीज का प्लेन लेना है दोनों को अभी. अरे how was Jalandhar? I'm seeing you after a week, I guess. Too good, bro. I am so shocked by what these small. I don't know if I should even call Jalandhar a small city, but Mumbai के इसमें तो Tier 2, Tier 3. But what a turn up, bro. Like everyone, they make you feel like it's so important and like that you've done something. पूरा culture में सब लोग आ जाते हैं. It's crazy. And मजा आ गया bro. जलंधर was a vibe. तेरे को आना चाहिए था. कितने लोग थे? सीन था क्या? कुछ 900 950 लोग आए थे. 1000 लोग के आसपास लोग आए थे. Imagine. सीन में मतलब ये था कि मतलब it was a street fest type of thing. And we called अपना सारे brands को वहाँ पे बुलाया था, resellers थे वगैरह वगैरह. It was a very culture vibe. कितने लोगों ने autograph लिया? Yeah, उसका भी. Jokes aside, but I'm very serious. I'm proud of what you've achieved. I've been friends with you over for like what 4-5 years, 3 years, 3 years since before. Since before Jaywalking was an idea. I remember like we met because whatever was going on at that time, you were into music, this that, and then you come up to me after we become friends and like, oh, bhai, मैं brand चालू कर रहा हूँ. And that time, to me, obviously, like fashion and all that was a very alien idea, even as a business, right? How big it is in India. But you were telling me about your brand. I was like, हाँ ठीक है. I was like literally judging like क्या हो रहा है, ठीक है क्या मतलब streetwear क्या होता है इंडिया में चलेगा. And now it's been like everything everyone's wearing like is Jaywalking. That was a statement, not a question. I want to know what you feel about it. I feel, dude, bro, like one second. The fact like we have, remember right? We were always chilling back then, and you were such a different person who never wanted to talk and like make a conversation with like full confidence. To now, literally, when you enter a room or when you want to talk, everyone's stopping and listening. Yeah. It's very incredible for me to also see it as a person. Like I said, I'm proud, of course, but it's crazy. Like how do you feel? It's so, back in the day, I was never able to speak because it felt like I've not achieved anything to really go out there and speak. Because I was noticing like 16-year-old kids were also somewhere hustling. They're trying to do something, maybe. And I felt like it's not my place anywhere. Like I was constantly failing, right? So I never had the confidence to speak up, publicly speak. I knew, I always felt like I will do something. But I didn't know that it's going to happen so fast or it's going to happen like this. But so before we speak about that, you just said you were constantly failing. What do you mean by that? I don't. So when I say failing, no, it was a very personal thing. Matlab, a lot of people will obviously not call it a fail moment, but it. I don't know how to explain. I felt like you held a lot back. When you wanted to go and say something like, for example, the statements I would make about probably, let's say, any sort of, let's say fashion, okay, when you spoke about what the brand would be and I was like, okay, no, this is not how it works. I'm a guy who always follows rules and does that, and you were always like, no, that's not how it's going to work. But you would never like sort of go out and try to correct me. You would always hold back, and I could really see that. Give me a minute. That's fine. No, what happened? It's intense, bro. And also it's too many things are getting jumped this up. This is what I want, but this is what I want. बाकी सब जो तू करता है stories पे लोग 100 बार देख चुके हैं. That's true. वो क्यों बात करे? That's true. I can see the real you come out. The guy who's literally like, okay, it's wrong for me to say real you, but the guy I've seen, man, it's like a seed grow into an insanely rare flower or whatever you want to call it. I can see the intensity in your face, like what you've been through, everything's just sort of... bro, I would to say it's I don't know how you must be feeling also because you've seen me from me trying to become something in a whole different industry, which was rap, right? We technically met for the first time because you wanted to manage somewhere me to like become big in the rap space. When I very quickly realized that that's not something that I want to do,
and it's not something that I would be able to sustain for a long time. I honestly very desperately wanted to make my name in the art space. I wouldn't say even fashion, but fashion was the easiest thing for me to translate it, my art to. And what that gave me was so much freedom. Today, I meet so many people now, they're like, yeah, how are you doing it? Like you keep asking me, right? You've asked me 100 times, how are you doing it? Honestly, I don't know myself. But what I have done is I have treated, say, Instagram like Instagram, जहाँ पे तुम कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी भाषा में बोल सकते हो, कितना हार्शली भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. I remember you. And- I remember you saying this exact thing to me 3 years ago, and I did not get it. Now I get it. Yeah, I used to tell you you're too formal where that kind of formality is not needed. And I realized that only on Instagram, I realized people are connecting with me so fast. I see so many other brands. What they do is they treat their brand as a brand. Like कि ये product है, इसको ऐसे ही communicate कर सकते हैं, कि इसके बारे में ऐसे ही बोल सकते हैं. हमने ब्रो कितने सारे टी-शर्ट्स है. एक टी-शर्ट था जिसका मेरे पास प्रोडक्ट का इमेज भी नहीं था. विदाउट इंस्टाग्राम पे बोला कि देख लो ये प्रोडक्ट है, और बोला हम लोग बिना इमेज के प्रोडक्ट वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, जाके बाय कर लो. इमेजिन वी आर सो लाइक laid back with our things, you know. We treat website as a formality कि जहाँ पे मुझे पता है मेरे को क्या लेना है, मैं जाके ले लूँगा. बेचने का काम इंस्टाग्राम पे होता है हमारा. So you know how I am, right? If I go live, if someone's bothering me, I will call him out on Instagram, be like, हट तू, you know, क्या पूरा टाइम डिस्काउंट करते रहता है, क्या पूरा टाइम तुम लोग को इसी से लेना देना है, बात करो, पूछो मैं कैसा हूँ, ये, you know how I am, right? So, and now when but one thing is there, I used to feel like I'm someone from the second month of business only, that you know. The confidence कब आया पता है? The second I had a product in hand. क्योंकि पता है proving point, अब जैसे for example you can talk to everyone about this podcast and no one's going to take you seriously. But the second you have the video in hand and it's on YouTube, no one is going to give a about how many views you have or how many people shared it. It's a real thing out there, right? That you've actually spoken to these real people, real stories, real everything with a proper setup. So that gives you confidence. When you have something to show, तो वो confidence मेरे को शायद दूसरे तीसरे प्रोडक्ट से ही आ गया कि भाई मैं राजा हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे पास प्रूफ है कि ये प्रोडक्ट है, इससे धंधा हो सकता है, इससे मैं मतलब इससे. एंड यू नो हाउ मेनी people have started their brand after we've started, just because I ended up speaking to each and everyone, telling them how easy it is. We also speak about business so many times, and I tell you that bro, it's halwa hai, ये कुछ नहीं है business शुरू करना. You know, it's a joke. The toughest part is going from concept to product. उसके बाद बिक जाता है सब कुछ. And considering your brand has always like been art focused, right? Initially, it was difficult for even me to wrap my head around the fact that it's how is this person going to ever sort of commercialize or actually generate right revenue for like what he's talking about. Obviously, like considering wherever you've been, you have like that understanding of क्या इससे क्या होता है, who's the right, let's say, person to reach out to, you know. Yeah. Initially, I know you were focusing a lot on Instagram, pushing a product out, you didn't have a website, etc. But now I see like you have a very, very loyal customer or consumer base or fans, whatever. Actually, I'm very confused to उसके लिए क्या है पता है bro? I have realized, जैसे आज तू जो टी-शर्ट पहन के आया था, उस पे भी मेरा नाम लिखा था. Yes. इस पे भी मेरा नाम लिखा है. वो सही नहीं लग रहा था. मेरा पॉइंट ये है कि if you're selling also something, no, sell the right thing. मतलब होता क्या है, if now you know, right, what size fits you well or what is making you feel more confident. So that is what I do when someone walks in. First, I want to talk to everyone. That is what I've done since the beginning of the brand. But I didn't get it before I actually wore your thing. Like we've been friends for the longest. I always said, "Nay, this is not my type." This that. And even when I wore whatever I wore earlier, right? It's comparison, because whatever's there outside right now, whatever standard's been set in terms of fit, in terms of comfort, in terms of like whatever fabric, right? Like I know now, I get why people are becoming so loyal. Why, like, what is the difference? So I'll tell you how it started. The difference in the beginning was that I wanted to communicate with each and every one of my customers. मतलब तेरे को भी पता है, हमने website for the longest time we didn't start. भाई 500 लोग लैक्मे फैशन वीक भूलूंगा नहीं. So the sole reason was that अगर मैं
एक को एक जन से बात नहीं करूंगा, अगर मैं उनका रिएक्शन नहीं देखूंगा, प्राइस सुनने पे क्या है, क्वालिटी देखने पे क्या है, पहनने पे क्या है, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा. सो व्हाट यू सीन इज दैट आवर फीडबैक लूप इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, नहीं क्या बोलते हैं, फास्ट. मतलब मुझे देखना है कि तेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या है और मेरे को देखना है. आई एम सो डेस्परेट अबाउट इट. तो होता क्या है कि इंस्टेंटली आई नो व्हाट टू चेंज एंड आई मूव ऑन. एंड I don't know, like bro, you know that as much as I love art, I love selling, right? I to literally in the store I tell everyone that I'm the best salesman there is, and I enjoy selling. And in that process, I've made so many relations with my customers that they become loyal eventually. We have never said no to कि भाई ये मतलब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. You know what I'm saying? Like कभी ना मत बोलो. I really appreciate even the fact that whoever walks into your store is always treated equally. Everyone. See, that's what I'm saying. No, the sole reason I'm doing this also right now is not to sell product. Correct? We both have noticed that we've met so many people who have not even touched Jaywalking product, but are huge fans of me. And I want to cater all of this to them so that at least something sparks in them कि भाई इसने एक चीज बोला था जिसकी वजह से आज मेरे को थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो कुछ clarity मिला. You know what I'm saying? So is the sole reason I try to meet. और पॉपअप्स भी क्यों करते हैं ब्रो? सिर्फ सेल करने के लिए नहीं, एक लोगों को एजुकेट करना इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट इवन ट्राई अ बॉक्सी फिट लाइक दैट, यू नो, जस्ट बिकॉज ऐसा थोड़ी होता है. स्लीव तो हमेशा टाइट होता है, स्लीव तो हमेशा ऐसा. उनके दिमाग में ये सारे रूल्स हैं जिसको यू नो यू गॉट टू मीट देम एंड लाइक मेक देम. सो या, how do like since you mentioned that, right, like exactly what I also mentioned in the beginning, like this guy who believes in not like doesn't believe in any rules, right? Like for example someone like me who's been grinding, doing whatever for years, believing bro, in rule rules. किसको पता रहता है? believing in rules. जिसको कुछ भी पता होता है ना, Yeah. अगर तुमको रूल्स ही नहीं पता तो तुमको पता ही नहीं है फॉलो क्या करना है. जैसे मेरा पास तेरे को पता है, मैंने ना कभी इंटर्नशिप किया है, ना कभी कहीं पे इंटरव्यू दिया है, ना कभी इंटरव्यू किसी का लिया है. अब मैंने किसी का इंटरव्यू लिया ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं है कि इंटरव्यू में पूछना क्या है. अब द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई आस्क इज, यू नो, तू कितना लंबा मेरे साथ जाएगा या जाएगी, तेरा फ्यूचर का प्लान क्या है, तू छोड़ के चली जाएगी तो अभी चली जा. यू नो, आई एम वेरी इमोशनली, आई बिल्ट माय ब्रांड विद अ वेरी सॉलिड इमोशनल ये. I mean, a lot of people have told me that that's your weakness, but I think it's a strength, because if you think emotionally, your brand will sort of, you will build a solid team, you will build a team who will stand by there with you for a, you know what I'm saying? How do, but the same people, let's say when you started off, right, I'm sure a lot of people might have doubted the ways that you've gone by. One of them. And no, so I'm sure like a lot of people have doubted the ways you had gone by, including me. Like I remember telling you a lot of time in like, let's say marketing, right? This is how it's supposed to be done. There's no left, right, or center. How do people right now, when they've seen, okay, this guy who's a rule breaker in such a short period of time has sort of, I wouldn't say surpassed, but has achieved so much and done so much, like compared to like a benchmark of what a fashion business should be or what a streetwear brand should do. How do those people feel around you now? No, one of them was my father. Okay, so I'm telling you, we are having breakfast. I really wanted to get him for this conversation, but unfortunately, busy schedule. Bro, so he's also been in the retail business, fashion business for the longest time, 30 years, okay? But so the way they've done business and the way I was so crystal clear. This one morning at the breakfast table, I'm just sitting and I'm chatting. And I was like, यार एक स्टाइलिस्ट का मैसेज आया है, रणवीर सिंह के लिए कपड़े मांग रहे, मैंने मना कर दिया. My dad ऐसा पूरा अच्छे मूड में से एकदम थर्ड क्लास मूड में चले गए, बोलते तू है कौन, तू खुद को समझता क्या है? मतलब you know, they didn't understand what I was trying to do. They didn't know कितना वैल्यू है मेरा काम का, या कितना मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो तुम ऐसा लोखंड वाला जाके या ज़ारा में जाके खरीद नहीं सकते हो. You know what I'm saying? वो नाम का तो I used to tell him, but he used to be like, तू क्या समझता है खुद को? You know, but because he didn't have this perspective. Now he knows what I'm up to. You know, initially I used to feel very broken because technically what I was trying to achieve, you also didn't understand. Yeah, nobody did. मेरा family, someone who's very traditional in terms of business, उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि
कपड़े क्यों नहीं दे रहा ब्रो, शूट में तेरे को पिक्चर्स मिल रहे, पिक्चर्स का क्या, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक आई डोंट नो हाउ बट आई वाज सो क्लियर कि नहीं दे रहा, यू नो दे आर नॉट वर्थ, इट्स नॉट वर्थ इट, लाइक आज भी मुझे ऐसा फील होता है कि हर अपॉर्चुनिटी पे कूद के, यू नो कोई मतलब नहीं है, if you've got to know what exactly are you going to get out of it. You know, a lot of people are exploited just in terms of portfolio. कि मेरा portfolio बनते जाएगा, बनते. I know so many people, bro. So many people. Yeah, that's what they teach you, right? Like, okay, you give clothes out to stylists, you create a catalog for yourself, you put those posts on Instagram, then people are going to come by. That's like a fixed trajectory that everyone wants to follow. Bro, fashion में कैसा है? जैसे अगर मैं किसी दिल्ली की बहुत एक डिजाइनर हूँ जो घाघरा चोली टाइप कुछ बनाती हूँ, उसके लिए ये वैलिडेशन है, आई एग्री, उसके लिए लैक में करना या FDCI का कोई शो करना एक प्रॉपर वैलिडेशन है, क्योंकि आंटीज को ना फैशन वीक की मॉडल है भाई, फैशन वीक की मॉडल, अरे फैशन वीक की डिजाइनर है, इसने तो एक सीजन किया अभी रिसेंटली, उन लोग के लिए ठीक है, अपने लिए doesn't make sense. Why? First of all, is because चल अगर मैंने फैशन वीक कर भी लिया तो इंडिया में ऐसे कोई स्टोर्स हैं ही नहीं जहाँ पे हमारा सामान जा सकता है. जैसे अगर say imagine if Jaywalking was Jaywalking for India, imagine if Jaywalking was for a small place in New York, say Jaywalking was the biggest brand in Brooklyn also, I would be in 20 stores in America, right? Because उन लोगों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कम्युनिटी है, सब कुछ है. यहाँ पे हमारे जैसे डिजाइनर्स को ये सब करने का बिल्कुल कोई वैलिडेशन नहीं. अभी फिलहाल सबसे सही है अपना इंस्टाग्राम पे जो भी लोग रिक्वेस्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, स्टोरीज को रीपोस्ट कर रहे हैं, उससे बड़ा वैलिडेशन कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है. कोई भी मैगजीन तुमको शाउट आउट दे दे, फ्रंट पेज पे डाल दे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. दिस इज व्हाट आई फील मेरे लिए. Yeah, of course, dude. Like that's, I mean, apart from difference in opinion, it's also you are actually doing and living it, right? So there's no denying, of course. But what I really fail to understand is how is like, okay, yes, product in one side is great, your brand is good. How is your fan base actually loyal to you? Where they are literally, when they want to watch your vlogs, they want you to go live regularly. They want to buy your product. It's like everything, like it's a brand, yes, but it's also a personal brand at the same time that you're building. How are you sort of like creating that intersection? Why do you think people, is it that people love your product so they enjoy being knowing you or like watching your stuff, or is it because like they love you as a personality online, that's why they buy your product? That's what I've said this before also कि मेरे को बहुत अर्ली रियलाइजेशन हो गया था कि दो टाइप के ऑडियंसेस है मेरे. एक है जिसको सिर्फ कपड़े से इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए वो लोग मुझे फॉलो करते हैं. और एक है जिन्होंने मेरे को बहुत अर्ली स्टेज से फॉलो किया है एंड उन्होंने मेरा स्टोरी देखा है, जाना है कि ये कहाँ से आया है ये और अब कहाँ पे है और कैसे इसने किया है. तो दीज पीपल कॉन्स्टेंटली वांट टू नो कि अब क्या हो रहा है, अब ये क्या स्टेप लेने वाला है. तो वो एक सबको ना एक वो कांस्टेंट ईगरनेस है कि अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, यू नो. तो आई गेस दैट्स व्हाई पीपल आर वाचिंग माय व्लॉग्स आल्सो या सुन रहे हैं, बिकॉज हम लोग ने कभी भी व्लॉग में एकदम ऐसा नंबर्स की या सॉलिड ऐसा उस टाइप की एडवाइस की बात नहीं की कि जाके ये टाइप का बैग अपने नंबर्स रिवील करोगे तो हिल जाएंगे लोग. नहीं ठीक है ब्रो. ठीक है. हाँ ठीक है, ठीक से ज्यादा ही है ब्रो. अभी मेरा कल नाम नहीं लेना किसी का. नहीं ले ले अबे. नहीं वैसे नहीं. सो अपना ही म्यूचुअल फ्रेंड है, उससे बात हो रही थी, वो बोल रहा था कि कोई भी कौन सा थियोरी है क्या पता नहीं, मुझे बोल रहा था कि 0 to 1 जाना और फिर 1 to 100 जाना में बहुत फर्क है. और वो मेरे को बोल रहा था कि तू 1 पे आया है अभी. मैंने बोला देख, वो मेरे को बोल रहा है कि मैं 1 पे आया हूँ. अब if he is going to see this and we spoke सामने खुद से, ऐसा मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने उसको यही बोला कि ब्रो वैसे तो अगर कोई 1000 करोड़ का काम कर लेगा तो भी तू उसको 1 पे रख सकता है. तेरे लिए 100 is what? Apple बनना is 100. What is 100? Firstly you tell me what is 100. Then I'll tell you know कि हाँ मैं 1 पहुंचा हूँ या 95 कि 100 कि 1, you know. तो ये है यार, सबका अपना अपना. ब्रो सी एट द एंड ऑफ द डे, अभी जब हमने वो सेमिनार किया था दिल्ली के स्टोर में, कितने सारे ब्रांड्स यंग डिजाइनर्स आए थे ना,
हमने ईगो रखा ही नहीं है बीच में ब्रो कि इसको मैं बता दूंगा तो ये मेरे से आगे चला जाएगा या ऐसा कुछ. जाओ ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो. बिकॉज मुझे पता है, तेरे को मेरे को पता है कि मैं जितने घंटे इसमें लगाता हूँ, तू अगर तूने दिन का 20 घंटे काम किया, मैं लिख के देता हूँ, मैं 24 कर लूंगा, फिर सोऊंगा ही नहीं. क्योंकि if I get to know that someone's putting in as much effort, the sole reason I am so laid back and never stressed about competition is solely because मुझे पता है यार, मेरे जितना काम करके तो दिखाओ कोई. Bro, you're living it. It's not like from, like I said, since jaywalking has been a concept since I've known about it. Bro, you're literally living it 24/7, 365. And I don't mean like that, you know, वो glorify करते exhaust होना, not that. This is your life that you genuinely, even if you're on vacation, you're constantly in that set of like my what you call frame of mind where you are somehow thinking about it. मैं लोगों को यही बोलता हूँ, the sole reason I do pop-ups also, no? पॉपअप मेरे लिए एक वेकेशन हो Exactly. क्योंकि एक तो काम का काम, तुम पैसा भी लेके आ रहे हो और तुम इतने लोगों को मिल रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लोग तुमको इतना ध्यान रख रहे हैं तुम्हारा, ब्रो. तो सही है मतलब. But it's not normal. Like it's like more than normal. It's not like everyone can find this, you know. ब्रो ऐसा है, अभी तू बता, कोई भी बंदा जिसका लाइफ में चीजें हर महीने, हर 3 महीने ऐसा डबल ट्रिपल हो रहा है, तो तू क्या रुकेगा? क्या नहीं रुकेगा ना. तेरे को एक दिन का ब्रेक लेने में भी ऐसा लगेगा कि वहाँ क्या हो रहा होगा, इस स्टोर पे क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन में क्या अटका हुआ है. तेरे को वो देन यू दिस इज अ एक सबमिसिव, आई हैव सबमिटेड माय सेल्फ टू द ब्रांड, यू नो, लाइक इसमें. एंड इट्स अ गुड थिंग. आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग. You think it's a lifelong thing that you're going to be involved with, or do you see yourself some point step away, do something else? I'm sure you must have thought about it once or twice. I don't. So I will obviously never step away. I will obviously try to automate certain things. कि भाई वो तो होता है business में जो भी है. But I definitely want to I want to put my time towards art now, bro. I really want to sell paintings. I want to make murals. I want to make installations. I want to design homes. I want to buy land. I want to build a proper house and flip it. ऐसा कुछ करना है, of course. I want to get into F&B also. I want to do too many things, bro. I desperately want to get into F&B. Art's been, I think, at the center of your life, like since your childhood. Yeah. That's, but I think that's also something you don't talk a lot about. I know because I've been so close to you for a while and understand your story. I know like the depths of it. I wanted to talk about like let's say whatever your childhood, what you were going through in terms of. I remember you also tried working in fashion before you pursued rap or before you went out to study. That was for my dad. Yeah. That was for my dad. So a lot of that, I'm sure. I mean, from an understanding point of view or a confidence point of view, it somehow shaped you. It gave you, I wouldn't say platform, but it gave you the foundation as a human being to sort of go and fail for those few more years and then realize, okay, maybe I'm doing things wrong. I've realized that whatever I've done in the past, जो 6-7 साल ब्रांड शुरू करने के पहले जो ऐसा लगता था कि ये सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया, वो आज मुझे बिल्कुल वेस्ट नहीं लगता है. क्योंकि आई टेल यू, मैं अभी अपने जो दिल्ली में सेमिनार हुआ था उसमें the sole thing that I spoke about, one more thing that I spoke about was there was this one girl who was a rapper and a graphic designer or something like that, and I told her at any given point in time, no, don't feel like you're wasting time. If you feel like that, you live in guilt, and then you try to do something which is, it's going to be trash. You know what I'm trying to say is, imagine if I had stopped illustrations, right? Imagine if I was, because मैं जिधर बड़ा हुआ उधर आर्ट से पैसा बनाने कैसे बनता है पैसा? You tell me, how do you, even if you end up painting the best painting, how do you go about selling that painting? Even if you know you're the best, like you can draw best things, it's difficult, right? It's तो, और मैं कांदिवली में बड़ा हुआ ब्रो, तो उधर तो ऐसा लगता था कि इसमें तो कोई करियर, इसमें तो कुछ स्कोप है ही नहीं. मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम क्या ही बन जाओगे, एनिमेटर या वो भी कोशिश की, पता है, यू डोंट नो अबाउट दिस. सो व्हेन आई वाज वेरी यंग, समर स्कूल के टाइम पे एक बार मैंने 3D एनिमेशन ट्राई किया. सोचा कि मैं ऐसा टाइप का फैशन डिजाइनर बनूंगा जो 3D मॉडल्स पे कपड़े पहनाता है. फिर जब मैं एक्चुअली क्लास में गया, मुझे पता चला कि साला एक कान बनाने को आधा घंटा लगता है. मेरे को लगा कि मैं क्या करूँगा पता है, ऐसा हुडी बनाऊंगा और धपाधप चेंज करूंगा और पूरा रन में. So I quit that also. I was like, bro, like
So to master that one thing, I would have wasted probably I don't know how many years, right? So yeah. So I told that girl also who had come for the seminar, I was like, if you feel like you're wasting time, don't feel like that. Just keep doing so much of it that one day you will realize, oh shit, this is my original work. Like this is my original language. And then you will be on top of all your that waste of time, and you'll feel like, oh, ab kuch bhi, Now you can translate all this to so is it many something things. to discover or build? Because since you mentioned this, right, like original language, I remember even one of the first few times that we had met, it was at car Starbucks. It was raining very heavily. The glass was becoming foggy. You were writing jaywalking in a way where that style that you now use on t-shirts and everything. Yeah. So you had that style since then. Since again that time jaywalking wasn't even a concept. You probably must have thought about it, but nothing you had discussed like openly with anyone, or at least me. Yeah. Right? So you've had that original language. So is it something you discover, or is it something you come up with? It's something, see, the day you stop lying to yourself now. Abhi you've got whatever I've noticed one thing. Say if I lie, if I want to make name in fashion, I've got to know one more thing which I know as much, or I've got to love one more thing which I love as much as fashion. For example, like say you've got to love furniture to know balance in art. You've got to know something. Art is, obviously people say art is in everything, but you've got to know why is this chair looking so good. For example, if you have the eye for it, you will be able to translate this to a garment very easily. This might seem very deep, but जिसको समझना है वो समझ जाएगा. You know what I'm saying? समझ आया. जैसे bro, when you paint also, everything is at the end of the day a balance, right? Like when we are setting this camera also, you were thinking of कि भाई balance अच्छा नहीं लग रहा है, background में बहुत यहाँ पे गजपुच हो रहा है, यहाँ पे light, it's all balance, right? अगर तुमको, if you have the eye for that frame, तो तू paint भी गिरा देना एक बार canvas पे, तेरे को पता चलेगा कि यहाँ पे ज़्यादा गिरा है, यहाँ पे कम गिरा है. If you're into abstractism or if you're into clothing, you would know balance there. So if you do way too much of it, like say if you're a videographer and you do too much of it, at one point you'll understand, ना ये इसका style है. Iska, now do you get it? Yeah, of course. So that's what I think is the way you could be original, And how did it come to you? Like, is this something? I don't know. Like different influences, or like something you used to randomly paint, and then you figured like probably this is what I think is my style. Like, is there a point in time, or is it like over time? I think it's an accumulation of so much that I've done, so many places that I've been, and I noticed that I never stopped drawing. Which is a good thing. I never. I used Were to. there random sketches that you had? A lot of sketches, bro. I'm telling you. Yeah, see, I think it rings a bell. You mentioning about how growing up also you have some random sketches, which are the same right now, bro. There are some things that I've drawn in like 2011-12. जो मुझे मेरी मॉम ने कुछ या किसी ने व्हाट्सएप किया कि ये देख तेरा पुराने स्केचेस है, इसका क्या करना है. I was like, oh my god, it's the same shit that I've designed right now. So certain things don't change, But one problem is, like, if you take too much inspiration also from something, then you don't become the benchmark of anything, And what people should really fear is how to not take inspiration from anything. Like, you should always keep your inspiration very primary, from very random things. Very, very primary. Like, why do I like this? What is it in this that I want to take? Like, you should, what you see, not something on the internet or what someone else is doing, is what I feel makes you original, I guess. But it's very difficult, like the way you say it, obviously it's become very natural to you now, but even like what I do, right, like be it any sort of content creation, design, video, where you sort of see things you process and then you sort of go and implement it in your own style. It's easier to, let's see a ready product on the web, like on the internet, versus seeing living objects. Like obviously I again have not like ever understood how people, let's say, look at the sky, get inspiration and end up painting. I mean, you are taking a living example of what's in your eye, which has so many dimensions to it, and putting it on a paper or a canvas, a piece of canvas where it's flat, right? The amount of understanding or like the
like the process of it going from reality to the canvas, it's not easy. Of course it's not easy, but it's if it comes naturally to you, it's easy. I mean, जैसे Does it come song, naturally to you? I feel it does. मतलब मेरे को आज तक मतलब हाँ मैं ये बोलता रहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत किया है क्योंकि every business has that 30-40% of work which is त्रास, you know, which you don't want to do but you have to do. So वो सब ठीक है, but when it comes to like communicating with the audience, designing clothes, presentation, ये वो तूने भी देखा आज तक हमने कभी भी एक भी official ऐसा फुल ब्लोन शूट नहीं किया है. मैं तो ऐसा नीचे डालता हूँ टी-शर्ट, फोटो लेके अपलोड कर देता हूँ वेबसाइट पे इधर उधर. Bro, you've literally broken so many of my existing notions in terms of like this कोई specific- ऐड नहीं रन किया हमने आज Yeah, तक. this specific example that you're talking about, bro. Like the minute you said fashion for me, it's like इस photographer को बुलाओ, उसका नाम बहुत बड़ा है, 2-3 लाख रुपया खर्च करो, पूरा setup लाओ, बड़ा studio लाओ. But you are a guy who's literally ये चल ये रंग उठा, Bro, आज अपना के iPhone time पे- निकालता हूँ, फोटो शूट करेंगे, डाला इंटरनेट पे, वही वेबसाइट पे, and it's Bro, like, probably back in the day ये सब इसलिए चलता था because जैसे अगर समझ किसी ने दबू रत्नानी से फोटो खिंचा लिया तो उस टाइम पे हैशटैग और ये सब तो था नहीं कि भाई आज के टाइम पे one hashtag is gonna broadcast you to the world, right? अब किसी को पड़ी नहीं है किसने फोटो लिया है, फोटो अच्छा है तो अच्छा है, बस फिनिश. अब तूने ये पैंट भी पहना है तो तूने इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन सोच के नहीं पहना है कि किसने तुझे अच्छा लगा ना तूने पहनी बस. सो इफ पीपल आल्सो डिजाइन और मेक थिंग्स लाइक दैट, फॉर एग्जांपल दिस कन्वर्सेशन आल्सो अभी कैसा कोई हाथ पैर नहीं है इसका, हम बस बात कर रहे हैं. बट अगर ऐसे ही चीजों को करो तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ उसमें से निकल ही जाएगा. But a concept that really doesn't sort of, I can't process it even till date, right? Like when you talk about working hard and at the same time you say something you do needs to be effortless, it is so confusing. See, I'll give you an example. अभी जैसे a dancer, अगर कोई बहुत अच्छा डांसर है तो उसको देख के तेरे को effortless ही लगेगा ना. मतलब you know a good dancer is an effortless dancer, right? But there's so much effort behind that. But that is prep. मतलब वही तो है कि bro, if you do something a lot then you just I don't know how to explain. Let's talk about it in terms of your own brand, right? हाँ. One thing you focused on is keeping things effortless, but at the same time you maintained a quality threshold and sort of had good stuff go out. Bro, देख कैसा है, मैंने अपने ब्रांड में अपना ही स्टैंडर्ड खुद ही सेट किया है. ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ. अगर ये चल रहा है तो उसमें और ज्यादा एफर्ट डाल के टाइम क्यों वेस्ट करना है. मेरा बस इतना ही है. जैसे ये पॉडकास्ट ले ले, मैंने अपना जो फर्स्ट पॉडकास्ट किया था ऐसे टेबल पे एक कैमरा रख दिया था, ऐसे फोन से पकड़ के हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. गया ना मेरा 6 एपिसोड हो गया, तेरा भी ये पहला हो रहा है. क्यों? क्योंकि तेरे को क्वालिटी अच्छा करना है. ब्रो, ग्रोथ हमेशा हर चीज में होता है. मतलब चल एक पहला वीडियो अच्छा नहीं है पर दूसरा थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तीसरा और थोड़ा ज्यादा, तो लोगों को भी अच्छा लगता है. देख बंदा प्रोग्रेस कर रहा है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो आई थिंक मतलब जैसे मेरे ब्रांड But don't you feel so, like you said, right? You know your let's say you're doing a podcast. Exactly the perfect example you gave, right? तूने रख दिया टेबल पे कैमरा, 2 बीन बैग थे, हो गया पॉडकास्ट. Don't you feel like someone like you, let's say you have so much to contribute in terms of knowledge, yes, in terms of talking about it, but also the standard of content you should be putting out. Don't you at any time, in terms of let's say जो भी visuals हो यार, don't you feel that I'm such a big fashion designer or like I'm such a big brand, but I am literally shooting this, I don't know, it's just like a very mental block that not only me, everyone has, I'm sure you know about it. That okay, if I am this XYZ person, I am at this level. वही maturity होता है, bro. I'm telling you, that is so. If I wait, see, there is time is something that is limited, no. First of all, limited time है, इसमें तुम कितना कुछ कर सकते हो. That's it. Like मेरे को vanity man चाहिए, मेरे को makeup artist चाहिए. ऐसा नहीं, bro. वही तो बोल रहा हूँ. वो उससे तेरा content अच्छा हो जाएगा क्या? कितने सारे संडास गाने हैं आज मार्केट में जो बहुत अच्छा बना है, मतलब अच्छे बड़े स्टूडियो में बना है, बड़े बड़े पैसे डाल के मॉडल्स, रशियन मॉडल बुला के फरारी लैम्बो खड़ी करके, बट गाने तो ट्रैश ही है ना. व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर तुम see there are two things, it's either consistency,
या तो तुम 3-3 महीने लो, फिर एक वीडियो निकालो, और अगर वो ग्रोथ तुमको सही लग रहा है, स्लो स्टडी विंस द रेस टाइप, फिर वो ठीक है। उसमें मतलब सबका अपना अपना होता है। ये मेरा है, मेरा कैसा है कि अगर मेरे को अगर आज एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तेरे हिसाब से कितना टाइम लगना चाहिए मेरे को, मैं बोलता हूँ मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ आज अभी, तो मैं 4 घंटे में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, 4 घंटे के अंदर अंदर। क्या करना है मेरे को, मास्टर को बोलना है काटो, वो पैंट बनाया, मेरे को बटन भी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं पहन, चल फटाफट पहन ले, एक फोन से फोटो लिया, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, बिकना शुरू हो गया। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट इज हाउ आई लाइक टू कीप इट fast, very fast paced, which is why probably we've seen so much of fast growth also. Absolutely. For example, you could have see, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरा है, अभी मैं खुद सीख रहा हूँ कि यार ये तो बहुत अच्छा सेटअप है, हम भी ये कर सकते थे, बट आइडिया इज कि मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है। Okay. तो which is why that your basic goals are generally to get it done rather than just like overthinking. Overthinking नहीं। So for example, अगर इसी पॉडकास्ट को और क्वालिटी अच्छा करें, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? इस व्हाट आई एम सेइंग। इससे ज्यादा क्वालिटी और ऊपर करके कुछ at this point in time not really, yeah. अगर तू रुका होता, इससे भी अच्छा कर सकते हैं यार, रुक जाते हैं, तो क्या हुआ था? ये नहीं हुआ होता। Of course. दैट इज माय बॉटम लाइन कि भाई करो यार। और जैसे लोग धीरे धीरे, you've noticed राइट, कि हमारा जो एस्थेटिक था और हमारा जो जिस टाइप के पिक्चर्स हम अपलोड करते थे, तब से आज में फर्क है ना। Of course. पहले सब कुछ मैं शूट करता था, आज हमने फाइनली एक कंटेंट क्रिएटर को हायर किया है। So yeah, good stuff. I've been seeing not exactly what you've been doing, but like now finally you've delegated that. I'm very impressed. Yeah. How have you led anyone else? Like whoever the person is, I'm sure is talented because तेरा भरोसा भाई। तो I mean I'm very anal, you know. मेरा तो बहुत, मैं collaborations नहीं कर रहा हूँ sole reason wise। मेरे को I want to feel in control। ये सब कुछ अपने कंट्रोल में है, पूरा रिस्क मैं लेता हूँ, पूरा सब कुछ। मतलब आज भी सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई मैं करता हूँ, आज भी कोई भी पिक्चर अगर अपलोड होना होता है तो वो मैं करता हूँ। Bro, you know, like again, the perfect example that you just brought up, I really respect your brand. Why? That you have managed to control so many aspects of it, but still scaled it to a level where the revenue is actually very high. Again, I can't speak of numbers unfortunately, but yeah, risk appetite, dude. Like because of the internet, most of the information is out there. People know क्या करना है, कैसे करना है, पैसे कैसे कमाने हैं, business कैसे चालू होता है. Risk is something you've like been taking since day one. Like I remember, be it in terms of elevating your lifestyle or be it in terms of your own fashion brand, you have never doubted yourself even once. Like उसके साथ ही risk grow हुआ है. My question is I want to understand like how, कहाँ से आता है इतना risk लेने का, like you know, I don't know, what do you say, like what do you, it's I would say motivation or it's the just the overall strength to sort of ये करना है। अभी I remember a few times like 500 टी-शर्ट के ऑर्डर दे दिए एक नए डिजाइन पे, सेल्स कैसे करोगे उतने, you know? ब्रो अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर तुम्हारे पास इन्वेंट्री है देन यू आर किंग। लाइक इन्वेंट्री इज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तेरे को कल ओके, यू नो फॉर एग्जांपल तेरे को नहीं आएगा, ऐसा तेरा मानना है ऑर्डर, बट अगर समझ कि तेरे को 50 ब्रांड का एक साथ बोला कि मैनेज करो 50 ब्रांड, तेरे पास बैंडविड्थ नहीं है ना, सो यू विल मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाट आई एम सेइंग इज, चल रिस्क, अपन पहले रिस्क पे रहते हैं। Risk is something that you've got to take for growth, and if you project growth, you should always first of all project growth कि भाई चल थोड़ा तो थोड़ा ग्रोथ होगा, और उस हिसाब से अगर तुम कैलकुलेट करके रिस्क लोगे ना ब्रो, you're sorted। मतलब एंड मुझे पता है, मैंने अभी किसी को बीच में बोला था कि अगर तुम्हारे पास 20 करोड़ का इन्वेंट्री है तब जाके तुम 2 करोड़ का सेल करोगे, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारी इन्वेंट्री ही नहीं बढ़ा रहे हो, और a lot of people do this mistake where what they think is bro बनाने के लिए मेरे पास resources है, ऑर्डर आएगा तो बना लूंगा, और उनको ऐसा लगता है कि रातों रात कहीं से उनको समझ 500 पीसेस का ऑर्डर आ गया तो मैं बना लूंगा, बट अगर 500 पीसेस का ऑर्डर आया ही नहीं है और आता नहीं है तो इतना इन्वेंट्री क्यों बनाऊं? पॉइंट भी, अब देख, रिस्क लेने का एक
सही चीज क्या है कि तुम्हारा स्टोरी इंटरेस्टिंग बनता है ब्रो. लाइक आज के टाइम पे तू मेरे को यहाँ पे बिठाया ही क्यों है? क्योंकि मैंने रिस्क लिए है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरा कुछ हुआ है ना. अब you also know that I was making so much money and I still bought a very stupid expensive car. Why did I buy it? Because I wanna enter a meeting also in style. You know, it's all about making your story very interesting for me. Like I know that if you, though at the end of the day, I really want to genuinely motivate also a lot of people into doing something. And you've seen me really pushing that extra mile to make sure someone gets worth out of what I'm talking. Like मेरे अगर कोई मेरे से 10 सेकंड भी खड़े रह के बात कर रहा है कि भाई how did you do it? You know I will put in all my effort to at least make them explain how I did it. But it makes sense, dude. Like, it's for you. It's your process, right? That you want this process to become, let's say, something that people will look up to in the future, and you understand. Okay, risk or like, let's say, taking that leap in terms of in terms of scale in your business or in terms of whatever you're doing, even your talent, right? Like जो तुम्हें नहीं आता है, तुम वो try करोगे, फिर you're big. ऐसे नहीं कि मैं सीखूंगा फिर ये जाके बेचूंगा, right? Bro, देख कभी-कभी कैसा होता है कि जो तेरे को रिस्क लग रहा है वो मेरे को एक बहुत सही सुलझा हुआ प्लान लगता है. जैसे मुझे पता है कि मैंने दिल्ली स्टोर में इतना खर्चा क्यों किया, मुझे पता है वहाँ पे मेरा कितना. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मैं भी स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ, मेरे कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ उन लोग के पास क्या है, उन लोग का लाइफस्टाइल क्या है. हाँ, तुम अंधा मतलब किसी रैंडम सिटी में तुमने खो दिया. Of course, things are calculated, but what you think is risk is a very calculated decision for me. Even when, again, going back to the car, you thought it was the stupidest thing. Yeah. I know for a fact I had no other expense like in life. I could afford that. Like I was not paying rent. आज के टाइम पे you know तू अपने घर का रेंट नहीं देता. तेरे मम्मी पापा को पैसा अपने को देने की जरूरत नहीं है. We don't come from उस बैकग्राउंड से जहाँ पे अपना घर अपने को बनाना है क्योंकि अपने मॉम डैड के पास नहीं है, या अपनी गाड़ी खुद हमको अपने लिए लेनी है या ना कि फैमिली के लिए लेनी है. अपने पेरेंट्स का टाइम अलग था. उन लोग ने इनोवा क्यों ली? क्योंकि फैमिली कार चाहिए. आज फैमिली कार है ना अपने पास, तो दूसरी गाड़ी खुद लो. तो वो रिस्क नहीं. एंड उस टाइम पे मेरा ना तो मैं घर का रेंट भरा था, ना मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, ना मैं पार्टी करने में उड़ाता हूँ, ना मैं ट्रैवलिंग करने में उड़ाता हूँ. तो आई वाज लाइक ठीक है, यू नो. Another, see, there are different types of risk. Not some things are just monetary that you can see, but then there are so many opportunities that are also risks that you don't like. You know, I don't know how to explain. I'm getting too lost right now. That's fine. I'm getting very I want to say a million things, but it feels like I have to rush. ऐसा है. Which is I'm going ऐसा 10 जगह पे. I'm feeling it. We discussed, right, this conversation between you and I is like never going to end, bro. Exactly. It's a never ending thing. That's the point, right? Like even though because I've been there since the start, I've seen my eyes. It's like ये कैसे हो गया? Like समझ रहा है? It's not going to end. ये टाइम अभी एक एपिसोड में जितना बात कर सकते हैं कर लेंगे. फ्यूचर में एक और कर लेंगे. But bro, I have a feeling people have got to have some materialistic targets, something to achieve. Like the problem is a lot of people have absolutely no idea exactly what they want. मतलब where अगर तुमको वो लोग हमेशा बोलते हैं ना work उल्टा, बस अगर if you follow that then you know exactly what you have to do to get there. Like a lot of people, उनका perspective is not reached to a point where they exactly, like a lot of brands who start up, they don't know only where they want to go with this, right? उन लोग का initial क्या होता है कि हमको इतना सा सेल करना है और हमको खुश रहना है. मतलब I think no one has a broader perspective के at how many levels does unfold. मतलब जब मैंने शुरू किया था मुझे पता नहीं था कि इतना हर लेवल पे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर और एक लेवल है. And when you actually go there, then you feel like, oh shit, इसके ऊपर और एक level है. You know what I'm saying? But to level up, you've got to take those risks. You've got to, like. शुरू करने के लिए, like you mentioned, right? Like everyone needs to have that point where they start a business and they build their own story
and then they work towards, like you're saying, building your, again, like creating your own process. Right now, me again being a complete outsider, having no idea about how this business run. I'm sure there are a bunch of kids, right, like studying in fashion school or even like doing something else in life, but wanted to pursue fashion, wanted to pursue art. How do these guys get on to doing it? Like from a very simplistic standpoint, like what would you tell them? Let's say is the first thing you do. Bro, see, first of all, I have noticed a lot of people have finished their masters in fashion design. After doing that, they'll be like, bro, अब मेरे को किसी डिजाइनर के अंडर काम करना चाहिए, मेरे को और सीखना है, मेरे को और सीखना है, मेरे को और सीखना है. मतलब ब्रो, मुझे पता है जब मैंने ब्रांड शुरू किया था मुझे एक चेक लिखना भी नहीं आता था. मैं आज भी अगर हो सकता है ना तो मैं किसी और को दे देता हूँ, ले ले अपना नाम वाम लिख ले, मैं साइन कर दूँ. What I'm the point being is कि if you wait नो कि बस ये स्किल सेट जब मेरा थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ करूँगा, that is the worst thing any fashion student or anyone can do. You at no point will you learn everything. Once you start a brand, even if it's a fashion brand or a hospitality, any brand or any service, you will realize there are so many things that you had absolutely no idea how to do. I mean, you can create a phenomenal product, but if you have no idea, if you can't talk, if you can't communicate, even if say you can hire the top people, but अगर तेरा आइडिया ही तू उसको ढंग से बोल नहीं पा रहा क्योंकि तेरे में वो है ही नहीं वो स्पार्क, तो भी नहीं चलेगा. अगर तुझे बॉन्डिंग करने नहीं आता है, इफ यू आर नॉट अ गुड लीडर, इफ यू आर नॉट, देयर सो मेनी थिंग्स ब्रो. मतलब आई फील फैशन स्टूडेंट खाली कोई चीज़ पढ़ लेने से या कोई एक्सपीरियंस, मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी लोग ने हमारे साथ भी काम किया है, राइट, और उन्होंने छोड़ा बोल के कि अब हमको अपना करना है. ब्रो, तू कितना भी सीख ले, जिस दिन तू खुद का करेगा ना, यू कम बैक टू द सेम प्लेस वेयर अब मैं कहाँ से शुरू करूँ. सो स्टार्टिंग, यू नो हाउ आई स्टार्टेड, राइट, लाइक आई स्टार्टेड इन अ चॉल इन कांदिवली वेयर मेरा 300 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा ऑफिस मैंने बनाया. ओपनिंग डे तक I didn't have a design in mind what I'm going to make, but we knew, right, like where eventually क्या products बनाएंगे, क्या करेंगे. For example, that was a risk that I took, but it was a calculated risk. मतलब calculated in terms of बहुत छोटा फैक्ट्री है, अगर मैं ये नहीं बना सकता हूँ तो कम से कम मैं कुछ कमर्शियल बना के बेच दूंगा, so that at least you know that's a calculated risk कि भाई मेरे को तो गिन के 10 शर्ट बेचने हैं यहाँ का रेंट निकालने के लिए. You know what I'm saying? So you learn everything the second you start, and the first hurdle you face, if you're not facing hurdles, no, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ मतलब तुमको नया सीख ही नहीं रहे हो, obviously nothing's gonna be smooth. At every point you're gonna feel like अब इस situation में मैं क्या करूँ. अब if you're facing those situations, best you're growing. If you're not facing those situations, which means you're not even trying, you've not even gone out to see what the problem. You know where I'm trying to, of course, go with it. मतलब अगर मैंने in the previous seminar also I had spoken about this कि every day you should wake up looking for a problem. If you go out and look, जान पूछ के कि आज मेरे ब्रांड में मैं कोई प्रॉब्लम निकालता हूँ, वो प्रॉब्लम है क्या, to tick that off the list, no, कि ये प्रॉब्लम अब खलास हो गया, you know, that will show you growth. Because sometimes what happens is वो एक लेवल पार करने के लिए कुछ चीजें होती है जो तुमको पता होता है. A lot of people sleep over it कि ये है प्रॉब्लम, बट ठीक है अभी इस काम चल रहा है. वो काम चलने वाला चीज अगर तुमने एक once and for all खत्म कर दिया ना, you actually level up. You know what I'm saying? Like अगर मैं आगे जाके अगर मैं सोचूं कि मेरे को अपना पॉडकास्ट मैं मतलब हमेशा के लिए खुद ही कैमरा सेटअप करूंगा, खुद ही सब कुछ करूंगा, तो you know it's not very, you've got to start to outsource. ये तू मेरे को पहले बोलता था थोड़ा सा लोग काम करने दे, ये किसी और को करने दे, ये किसी और को करने दे. But see, you learn, you've got to know कि तेरा टाइम कैसे राशन करना है. A lot of people think they have a lot of time, but if you actually have a list ना कि ये मेरे को इस महीने में करना है, खत्म करना है, तो होता है ब्रो, ग्रोथ दिखता है. मैंने जो बोला था तेरे को वो मैंने हमेशा किया है. अल्हम्दुलिल्लाह. किया तो है ब्रो. I remember
अभी तो फिर भी इतना हंस रहा है, मजाक कर रहा है. I remember those early days, bro, where we would just sit and talk about how stressful your life was, like talking about your studio in Kandivali also, right? Yeah. I remember initially you were so stressed about just clearing like whatever rents or Basic overheads that you overheads, had. yeah. But the minute the product was out there, like जब बिकाई चालू हुई, you were very like confident कि भाई ये तो हो रहा है. Yeah. ये तो मतलब हो रहा है. 3 महीने के बाद you are like ये तो मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ पूरा. Right? Then you had like वो stress था ही नहीं. From that, like so from like I literally remember so much of that. Us, you remember those times, dude? We would be like you'd be dropping me on the way to my house, and you would be heavy breathing, like क्या हो रहा है समझ नहीं रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं रहा है. From that, right? That is also part of the process that you've been through. So it's not all rosy कि चलो मैंने brand चालू कर दिया, कल चलो हो गया मेरा बकाई, and suddenly overnight I'm this person who's like killing it, right? Yeah. That's I want you to talk about that as well. Like, can you like let's say okay now for example we last week we discussed right how when you were opening the Delhi store everyone sees कितना बड़ा store ready हुआ है. No one knows what you've been through. I know because you told me. I'm a close friend, so I understand. Like okay, I can empathize. कि ये बंदा चल. I know his levels of stress. People need to know that. Bro, people don't understand कि first of all I'm just 3 years old into the business, okay? और जो हमने किया है इसमें इस 3 साल में सब कुछ तुमको आना इज इम्पॉसिबल. मतलब मुझे नहीं पता था कि जैसे जिस दिन मैंने जगह देखा दिल्ली में और मुझे अच्छा लगा तब तक सही था. पेपर साइन हो गया और जब पेपर हाथ में आया ना कि ये जगह मैंने रेंट पे ले लिया है, एंड देन आई एम लाइक इतना बड़ा जगह ये बनाएगा कौन, इसको टाइम कितना लगेगा, इसमें खर्चा कितना होगा, इसमें मटेरियल क्या लगेगा. ब्रो मतलब इतनी चीज़ें तुम्हें एक एक प्रोजेक्ट से सीख लेते हो. एंड आई एम इन अ डिफरेंट सिटी जहाँ पे मेरा कोई सगा नहीं है, मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं है. सो व्हाट द आइडिया वाज दैट इट वाज सो टायरिंग एंड इट वाज सो बिकॉज मेरे ब्रांड में ऑफ कोर्स पीपल एक्सपेक्ट मी टू डू सोशल मीडिया. मैं ही डिज़ाइन करता हूँ, मैं ही प्रोडक्शन का देखता हूँ. तो ऐसा हो रहा था कि ब्रो ये तो मुझसे ये हो गया एक बार बट इसके आगे नहीं होगा. बट वो एक फेज होता है ब्रो जब दैट व्हेन यू नीड टू लाइक पुश इतना हार्ड कि भाई रोना आ रहा है तो रो, जो भी हो रहा है रो, बट दूसरे दिन उठ के वापस काम करो, यू नो. एंड यू नो हाउ आई एम ब्रो, आई हैव लिटरली लाइक वन ट्रैक माई सेल्फ सो मच के बट दिल्ली वाज ब्रो टफ. उसका थकान अक्टूबर में स्टोर खोला था आज तक है. मुझे ऐसा लग रहा है वो थकान जा ही नहीं रहा है. बट सही है ब्रो. बट इट्स अ ऐसा, और मेरे को ये इतना बड़ा स्टोर इसीलिए करना था ना क्योंकि ब्रो लॉट ऑफ पीपल वर वेरी कन्वीनियंटली कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू मी, यू नो व्हाट आई मीन. तो मैंने बोला ये देख लो अब. You know? How long was the process of like making the store? 3 months, 2 4 महीने months? नहीं, 2 महीने के अंदर पूरा स्टोर ग्राउंड अप बनाया. एंड द फक अप वाज इट वाज अ मिल जिसको उन लोग ने तोड़ के सब डिजाइनर्स को लैंड दे दिया कि यहाँ पे तुम्हारा मार्किंग के साथ. और पूरा ग्राउंड अप हमने बनाया. मतलब प्लम्बिंग वर्क कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक सबमीटर हम लेके आए हैं गवर्नमेंट से. उस लेवल पे कैसे सीखोगे तुम, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग. Bro, it's like even then, right? I'm telling you, like right now, obviously, I don't say it out loud because just like proven, your track record has proven that doesn't matter to you. But every time you're taking this decision, big decision, obviously, on like मैं store खोलूँगा where nothing is there. चल है दूसरे लोग business कर रहे हैं, but पूरा empty और शान से बनाऊँगा. Normally, people like oh खर्चा तो इसमें ज़्यादा होगा. We should go safer and probably take an existing store, do this stuff, etc. You know, all of that. It's crazy. When I came there, right, like the launch day, when the one night before, how like I can't like I have no words to actually comprehend to you, man. I'm just like, proud of you, Bro. like how you've done, like how you've built that from scratch, and it's incredible, bro. And I wish something like that was in Bombay. Because here तो हम वो छोटे stores पे कर लेते हैं, but वहाँ के store के जाने के बाद ऐसे लगता है lounge. There's like, dude, this is crazy. It is. And bro, when you actually do it, no, पहले मैं सबको ऐसे बोलता था कि बहुत easy है, but अब जिस level पे हम काम कर रहे हैं, now I know that
इतना काम अगर कोई कर दे, मेरा तो बहुत ब्रेक हो रहा है, ठीक है गेटिंग थोड़ा zoned। वो दिल्ली का स्टोर का मैं सोचता हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है दिमाग ही खराब हो जाता है। उसमें भी इतना सीखने को मिला ब्रो, इतने अच्छे लोग मिले थे मेरे को स्टोर बनाने के टाइम पे, बट सही है। Go on, you're talking about like whatever you were going through while that store was being built. यार that's a whole Roller coaster. yeah but People need to know it can't be all like reality and what they see online. They just see the success, they see the clothes being worn by everyone, they see like the rosy aspect, they see the funny side of you. But this is the truth, like the struggle and the like disturbance to your mental health properly at some level. What you've gone through, it's not easy. You might just say it's easy, but it's not, dude. I'm sorry. Like from an outsider perspective, what I've seen you go through. Yeah, it's a lot of effort. It's like a मतलब ऐसा होता है ना कुछ पॉइंट पे कि तुमको पता है कि इतना 100 लेवल का एफर्ट मारना है तो ये चीज हो जाएगा। When you actually do things, no, and when you're a sole person running the business, तब तुमको पता चलता है कि bro, this is a insane loop. ये कभी खत्म नहीं होगा। You won't be able to perfect anything. तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट वगैरह ब्रो, तेरे को पता है मेरी कितनी हटती है फ्लाइट लेने से। साला हर हफ्ते 7 दिन इधर 7 दिन उधर, 7 दिन इधर 7 दिन उधर। वो रहते थे उधर, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी पे जाते थे कि जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा, यू नो। एंड दैट लॉन्च डे ब्रो, हमने सबने अपना बॉडी तोड़ के काम किया है, यू नो। एंड ब्रो, the fondest memory of the store launch is not even the launch. It was that one day, one night before the store launch where we knew that we've got to take matters in our own hand. मेरा डैड ने पोछा लगाया है, मेरी मम्मी ने अनपैक किया है, और क्या कुछ नहीं किया है ब्रो। लोगों ने, तूने भी सामान उठाया है, हमने शीशे साफ किए हैं, क्या कुछ नहीं किया। बट ब्रो, so the fondest memory of this whole journey, that was that one night when we were, उस रात को भी पता है ऐसा लग रहा था कि ब्रो काम खत्म ही नहीं हो रहा ये काम खत्म कब होगा, you know what I'm saying? And then when we all went to the hotel and then we had that final dinner before sleeping, that was a good night. That is what you love, man. Like that's what you live for. That's what you live for. And that good, in fact, कि चल उन लोग नहीं थे, मेरा family bonding कितना अच्छा हो गया। It was crazy, bro. Everyone, bro, friends, cousins, uncle, aunties, everyone was at it, you know. And I'm so like grateful that everyone was working so selflessly, and that is what you live for, you know, to build that kind of relation. And दूसरे दिन भी, you know, हमने कोई वो बकचोदी PR को बुलाओ और गेस्ट लिस्ट बनवाओ, टॉप टियर लोगों को इनवाइट करो, इनविटेशन भेजो, ये नहीं किया था। तुझे भी पता है, हमने एकदम भंगार सा एक वीडियो डाल दिया था कि हाँ भाई कल स्टोर खुल रहा है, बहुत मेहनत किया, आओ। कितने लोग आए थे? Wasn't it insane to witness also? So sometimes I shock myself कि ये क्या हो रहा है, you know? And it's bro, from where I am coming, and then knowing that I have all these people's contacts, like one call away, and I can do this or I can do that. That feeling, no? So I am a kind of guy who is always jealous of people's resources, not their success. You understand? So for example, say if we talk about Virgil Abloh, I am jealous that he has 10 people at his disposal कि उसने बोला कि मेरे को इस शेप का बैग चाहिए, ये माइक के शेप का ये खुलना चाहिए और इसके अंदर सामान रखेंगे, तो 10 जन जाके वो बैग बनाएंगे, राइट? उसको सोचना भी नहीं है। अब 10 दिन के बाद वो लोग आके बोलेंगे ये लो सर आपका सैंपल, तो वो उसका रिसोर्स हो गया। आई एम ऑलवेज जेलस ऑफ पीपल हु हैव सो मेनी रिसोर्सेज। मुझे भी चाहिए वो, अगर वो मेरे को मिल गया ना ब्रो, देन आई विल डू, दुनिया जीत लेंगे। वाओ ब्रो, वाओ। बट होगा, अब बन रहा है, यू नो, एक कोर टीम बन रहा है, एक बहुत सॉलिड कल्चर बन रहा है। जब लोग एयरपोर्ट पे भी मिलते हैं तो it's a unreal feeling. So I feel extremely grateful के, and the sole reason I want to talk to everyone, no, मेरे को ऐसा लगता है कि
हर चीज इतनी कंपाउंडिंग, अगर तुमने एक जन को अच्छी चीज बोली तो वो अच्छा भी कंपाउंड होगा, और अगर तुमने एक जन को भी एटीट्यूड दिखाया तो वो भी कंपाउंड हो जाएगा और बोलेगा कि जय तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है. You know what I'm saying? So you should always make sure you give someone your 100, like, because bro, that's also an effort to like make sure everyone is answered and everyone has such, sometimes they are very lame questions also. सीधा आके पूछ लेंगे तुम्हारा वेंडर कौन है, हमको वेंडर का भाई साहब, you know. Wow, dude, that was something. That's exactly what I wanted out of the whole conversation, man. I mean, like I said, I know this, the struggle. I wouldn't even call it struggle. Like the process side of things in a very deeper manner. The fact that you're talking about it now, I can feel the intensity, right? Like what you're feeling, what you're going through, like what you went through back then. People like, bro, like had till the had time to know. I'm off, and the second I wake up, now it feels like चलो फटाफट इंस्टाग्राम चेक करो, शॉपिफाई चेक करो, वेबसाइट पे क्या हुआ है, इधर उधर क्या हुआ है. ब्रो मैं तो कॉन्स्टेंटली अगर कहीं पे अगर थोड़े टाइम भी बाहर होता, मेरे फोन में स्टोर्स का वेबकैम चालू रहता है. You know, I want to listen to what they are exactly speaking about. And the way you've seen, right, the way we've trained our staff also, that's all a part of building culture. कि भाई वो भी कैसे बात करते हैं, are they too uptight? Yes, bro. End of the thing is that इतनी चीजें होती है that तेरे को especially I want to tell you that you can't perfect anything. You've got to do, you know what I'm saying? Yeah, I know what you're saying. I'm literally speechless. Like, dude, last 10 minutes have been just good stuff, dude. I'm very moved. Like I've seen what I've gone through. I have no doubt that you can not achieve what you're literally talking about now. But one thing I've not asked you actually, what's next, dude? Like you have opening more stores probably across the country, going international. But what's Jaywalking going to be, or is there something new you're planning? What's next for you? I don't know. So as of now, I want to set some systems which has मेरे को ही पीछे आके बाइट किया है जो चीज़ों ने. मतलब I want to make certain, मतलब फिलहाल के लिए I want to streamline things. थोड़ा सा कि भाई again, क्योंकि अभी इतनी चीज़ें इतनी जल्दी हो गई है कि sometimes I feel like, am I not in control or am I in control? So the day I feel like I'm in solid control, I know everything about my business in and out, कि कहाँ क्या हो रहा है. Actually, this is not a plan. क्या बोलो ब्रो, कभी तुम सोच नहीं तूने सोचा था क्या कि इतना जल्दी इतना कुछ हो जाएगा? Not really. तो सोच के भी honestly you limit yourself if you set ऐसा कि भाई अब next यही है, क्योंकि opportunity तुझे भी पता है. बॉम्बे स्टोर जब हमने खोला तो ये कभी भी टाइमलाइन सेट नहीं था कि एक साल बाद खोलेंगे या आज खोलेंगे या नेक्स्ट मंथ खोलेंगे. I am someone who is so open and looking out for opportunity कि जिधर दिखा उधर ही slap, मतलब ये करना है ये. And if you are too aware of yourself and your power, you know you can do it. In terms of like कि ये अपना बैंड है इतना करने का, तो you will do it. So जैसा मेरा बॉम्बे का स्टोर है, the second I saw that the store is empty, first I thought it's shut because of COVID. But ये नहीं पता था कि उधर तो कोई है ही नहीं. खुला and I was like, बस. So you know what I'm saying? Like I'm always open to opportunity. अगर मैं किसी को भी, मैं स्टोर पे भी मिलता हूँ ना, मैं हमेशा most of the customers को पूछता हूँ आप exactly क्या करते हैं. Like so किसी ने बोल दिया अरे हम bags manufacture करते हैं, वो नंबर ले लेता हूँ. You know what I'm saying? Like always open. Like अगर किसी को कोई furniture भी बनाता है, अगर मेरे को future में बनाना है, so I'm someone who's very open to and looking out for opportunity. कि आप eyewear, you make sunglasses, awesome, give me your number, I would want to make a Jaywalking sunglass someday. So like that. That's something I've learned from you. One of the most important things is not to sort of overestimate or over-plan what you're going to do next. Yeah, not I at all. can literally see you live that, and it's every day pretty great. felt like one day at a time. आज कुछ उखाड़ने का है, आज कुछ करने का है, तो आज ये बस like that. And I think that's how people should go. बहुत ज़्यादा plan करेंगे ना,
ये बंदा मेरे को बोलता था 35 का होएगा तभी $1 बिलियन का मालिक होएगा। बस झूठ। 35 तो भाई बाकी है, $1 बिलियन। तो नहीं प्लान कर सकते हो ये सब, यू कांट। ऐसे लग रहा है अब तू कमा लेगा 35 $1 बिलियन तो हो ही जाएगा ब्रो आराम से। उसके लिए बिकाऊ होना पड़ता है ब्रो। Really? I think so. I don't know. Would you consider like raising money or like getting मुझे partners? मुझे on board? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ऑनेस्टली अभी तक। मैंने फंड रेज किया है और मेरे को पैसा चाहिए इन्वेस्टर्स से वगैरह वगैरह, मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया अभी तक। मतलब से अभी मेरे को किसी ने समझाने की भी कोशिश की थी कि अगर तेरे को अब और 2 स्टोर्स खोलने हैं तो तुझे इन्वेस्टर चाहिए। तो मैंने बोला कि वो तो मैं खोल सकता हूँ, नहीं बट अगर तेरे को 4 खोलने हैं तो या 400 खोलने हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब। मतलब इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली क्यों चाहिए, तेरे को क्या लगता है? मेरे को चाहिए इन्वेस्टर्स। व्हाट डू यू थिंक? I mean it's ऐसे सही गलत है नहीं कुछ। If probably like if you're doing X right now, you can do X plus 10 with more money on board probably. And if again it depends on whether you want to or no, because like you said right, the amount of control you've had on your brand, I think it's not possible or you wouldn't be open to the factor where like कल अचानक 10 लोग आ गए टीम में जो 10 अलग चीजें हैंडल कर रही है। This brand is running probably because your personal touch, people want that to be there, right? Yeah. So at some level maybe I get it, but you can consider it, man. Billionaire बनना है तो consider करना पड़ेगा। मेरे को तो गोवा जाना है सबसे पहले। Yeah, एक dude, holiday लेना है मेरे को। you need it. Especially after the last few years, I've seen you. Man, I can't do this. Even this conversation is just not enough, like to explain. I'm also not feeling very ऐसा yes अब काट दे बस हो गया finish। Yeah. तो Unfortunately, but like I think it's time. I think we should just take a break and sort of cut this conversation short and move on. And want to end it with like major respect, man. Like I said, I've been there since the start. I've seen what you have become from what you were. Yeah. It's incredible. I literally tell everyone every day, dude, like how much I look up to you. So thanks for being there. Thank you. Let's really excited for what's going to come in your journey, and hope everyone grows together. Hope I'll be there for another 3 years, 10 years, 30 years, whatever there is. Whenever Jaywalking story is going to end. अब तो ऐसे साइंस डेवलप हुआ है, लग रहा है कोई कभी मरेगा नहीं, बट देखते हैं। Yeah. सही है।